So today we are going to solve the question which is came on 25 April on Cognizant Assessment, Technical Assessment. So this question says Alice has an integer array which is A, which has a length n. She wants to split the array into two non-empty parts at some index I. The first part consists of elements from indices 0 to I, and the second part consists of elements from indices I plus 1 and minus 1. So Alice considers a split to be fair if the absolute difference between the sum of the two parts is an even number. So our task is to help Alice to find and return an integer value representing the number of fair split possible in array. So इसमें क्या है कि हमको एक इंटीजर एरे गिवन है और एक एन गिवन है विच इज द साइज ऑफ एरे और हमको रिटर्न करना है वो दोनों का डिफरेंस मींस लेट मी एक्सप्लेन यू बाय एन एग्जांपल ओके सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस इज द कोड स्निपेट तो ये आपको दिख रहा है दिस इज एन एरे तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले ith पोजीशन पे जो भी एलिमेंट विच इज हियर 10 इसको बाकी और दूसरे रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनका सम लेना और उनका डिफरेंस निकालना अब इसका सम आएगा अराउंड 26 सो हमको इसमें से इस सम को माइनस करना है। तो अभी हमारे पास इसका जो आ रहा है डिफरेंस विच इज -16 और इसका हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 16 सो ये 16 इवन है सो ये इवन है इसलिए हम काउंट को प्लस करेंगे प्लस बाय 1 तो काउंट की वैल्यू होगी 1 तो इसी तरह से हमें सबका निकालना है काउंट प्लस प्लस करके निकालना है यहाँ पर अभी अ, इसी तरह से हमें सबका काउंट निकालना है बेसिकली लेट मी शो यू दिस इज दिस या सो यहाँ पर एज यू कैन सी आउटपुट इज 4 और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया यहाँ पर 20 है विच इज अगेन यहाँ पर नेक्स्ट हम करेंगे आई का और i-1 का जो भी एडिशन है विच इज 20 यहाँ पर 20 है राइट सो ये 20 माइनस जो रिमेनिंग टर्म है विच इज व्हाट 60 सो इनका जो भी आएंगे इनका क्या आ रहा है 4 आ रहा है 4 आ रहा है मतलब दिस इज एन इवन नंबर so we increases the count by 1 here also so count यहाँ पर 1 से increase होगा ठीक नेक्स्ट ये ऐसा ही हमको पूरा ये करना निकालना है इसका so let us solve this question first and foremost हम हमारा integer array लेंगे which is हमारे पास से given just this हम इसको कॉपी करेंगे ठीक? और अभी हम अ, बस एक ये लेंगे एक और इंटीजर लेंगे जिसके अंदर हम उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे और एज हम फंक्शन बनाएंगे रिजल्ट नाम का जिसके अंदर हम ये एरे की वैल्यू गिवन करेंगे तो और उसको हम बाद में प्रिंट करेंगे जैसे कि लाइक दिस तो हम एक मेथड बना रहे हैं यहाँ पे विच इज नेम एज रिजल्ट
इंटीजर में दिस माइनस रिजल्ट, इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं array. Actually, they given us the size of array, but it is not necessary as we are using the dot length method, which is inbuilt function in Java. अगर आपको Java आता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे first upon using brute force approach. Okay, so first upon हम इसका इंडेक्स साइज लगाएंगे till array of length and then इसको प्लस करेंगे, then हम दूसरा लगाएंगे और इसका साइज हम कंसिडर करेंगे एरे ऑफ जो इंडेक्स आई है उसका प्लस, तो आई प्लस वन, देन इसका लेंथ क्योंकि आई प्लस वन है तो हम इसका जो लास्ट nth इंडेक्स है माइनस वन करेंगे, बिकॉज अगर हम माइनस वन यहाँ नहीं लगाएंगे तो एरर आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएंगे, तो देन आई यूज दिस। उसके बाद अभी हमें एक दो इंटीजर लेना पड़ेगा, बिकॉज हमको सम लेना है, दो दो स्प्लिट कर रहे हैं हम, तो हम एक सम ऑफ फर्स्ट स्प्लिट करेंगे विच इज जीरो, देन हम करेंगे सम ऑफ सेकंड स्प्लिट विच इज आल्सो जीरो, ठीक है, ये करेंगे। सो अभी हम सम करेंगे, अरे सम ऑफ फर्स्ट स्प्लिट विच इज पहला जो है एरे हमारे फर्स्ट एरे ऑफ आई इंडेक्स से करेंगे प्लस, देन हम सेकेंड स्प्लिट भी करेंगे जस्ट लाइक दिस, और इसमें हम चूज करेंगे हमारे एरे ऑफ fifth टर्म को, ओके, बट हमको ये जो है इसको जीरो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इसको फर्स्ट टर्म को जीरो नहीं करेंगे तो हमारा वो काउंट होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इसलिए हम इधर इसको जीरो कर रहे हैं फर्स्ट स्प्लिट का, समझ फर्स्ट। अब हम एक और इंटीजर लेंगे यहाँ पर डिफरेंस, जो कि हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है बेसिकली, but an absolute difference in that. But we are not going to use the inbuilt method absolute difference. Instead of that, we are just doing difference our usual way, which is publishing what it is. Okay, so I sum of second split. So basically, if I difference जो है हमारा, अगर वो uh, अगर वो निगेटिव में है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, निगेटिव निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो देयरफॉर हम इधर इसको निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस बन गया है जैसे कि। तो अभी हमें एक और एक कंडीशन लगाना है विच इज काउंट, हमको काउंट लेना है विच इज द होल आउटपुट दैट वी नीड टू कार्व आउट। सो यहाँ पर एक हम कंडीशन लगाएंगे कि ये हमारा जो डिफरेंस लगाना है, और कंडीशन क्या है कि अगर जो डिफरेंस है वो इवन इवन हुआ तो, इफ इट इज इवन देन वी आर गोइंग टू increase the count basically, right? Therefore we just increase the count, yeah, and now we are going to return this count which we have increased, okay? So let us see what is the output. Yes, as you can see on screen the output is 4, okay. So let us take some other input. If we take other input like this is basically 1, which is given in the question 1 2 1 1 2 2. So
इसका आउटपुट होगा 0 because 1 minus 2, it is 1, which is an odd number, and 2 minus 3 is also 1, which is also an odd number. So इसका हो जाएगा 0. So, so let me show you the output. As you can see on screen, it is 0, right? Um, yeah. So this is all about it. As you can see, the question, the second output and input. So yes. और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिकॉज हमने दो फॉर लूप यूज किया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट इज बिकम लाइक big O of n square was time complexity. Big O of n square is the time complexity of this whole code, which is not optimized. You can optimize it if you want. So yes, that's all about it.